everyone, welcome back to my channel. Let's begin with our last case study for excretory system, that is case study number 10. आइए फटाफट खत्म करते हैं इस पार्ट को. सब बोर भी हो गए होंगे केस स्टडीज देख देख के, बट बेटा ज़रूरी था. आई वॉन्ट कि आप सब कवर कर लो ताकि हमारा कुछ बचे ही नहीं. ठीक है, सो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लेट्स सी क्या दिया हुआ है इस केस स्टडी में. The Malpighian corpuscle, PCT, DCT of nephron are situated in the cortical region of the kidney. तो मतलब हमारा Bowman's capsule और glomerulus, PCT, DCT सब कौन से सेक्शन में आते हैं? कॉर्टिकल सेक्शन में. सिर्फ एक लूप ऑफ हेनले है जो मेड्यूला में लाई करता है. ठीक है ना? Whereas the loop of Henle dips into the medulla. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only a little, and that nephrons are known as cortical nephrons. Whereas in a few nephrons, Henle's loop is very long and it runs deep in the medulla. Such nephrons are called as juxtamedullary nephrons. बहुत ही easy, मैंने बिना देखे आधी केस स्टडी पढ़ ली. डायरेक्ट NCERT की लाइन से, इसमें कुछ है ही नहीं समझने जैसा. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस, दिस इज आवर Bowman's capsule. Bowman's capsule wrapping into PCT. This PCT then continuing into loop of Henle, which then emerges out as DCT and they collect together as collecting duct. तो if I mark and demarcate, होता क्या है कि up till this region it's all cortex and below it lies medulla. तो आप देखिए, चाहे ग्लोमेरुलस हो, चाहे Bowman's capsule हो, चाहे PCT हो, चाहे DCT हो, सब कॉर्टेक्स के अंदर सिचुएट हो रहे हैं. Whereas loop of Henle is situated inside medulla. ठीक है जी, and half portion of the collecting ducts also. Correct. अब यहाँ पे Malpighian corpuscle लिखा हुआ है, तो Malpighian corpuscle is nothing but glomerulus and Bowman's capsule together form Malpighian corpuscle. Okay, that's about the detail of this case study. Now talking about it questions. Which part of nephron are situated in the cortical region? अभी अभी पढ़ा हमने Malpighian corpuscle या फिर उसको renal body भी कहते हैं, PCT, DCT. These lie in the cortical region. And which are the juxtamedullary nephrons? Juxtamedullary nephrons are whose loop of Henle lies deep inside medulla. Medulla के deep region में. ठीक है जी? Let's see the answers. The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of nephron lie in the cortex, whereas in some of the nephrons, loop of Henle is very long, runs deep into the medulla, and these are known as juxtamedullary nephrons. Correct? So बहुत ही सिंपल केस स्टडी थी. There was nothing much. ऐसी केस स्टडी हो जाए तो आपके तो मज़े. फ्री के 4 नंबर. ठीक है जी. Thank you so much. That was all about it.